Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Dr. Muhammad Saklan Zahir, and today our topic is diversity of fruits. First of all, fruit can be fleshy like tomatoes, peaches, or they can be dry like coconut and peanut. They can have many seeds in them like tomatoes, papaya, and watermelon, or they can have a single seed in them like avocado, almond, cherries. They can be very large like jackfruit, pineapple, pumpkin, or very small like blueberries, raspberries and grapes. सो यू कैन सी द फ्रूट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कोई टमाटो जैसा होता है, कोई जनाब किसी में एक बीज होता है, किसी में बहुत से बीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रूट हैं ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इसमें बहुत सी डाइवर्सिटी पाई जाती है। and this is the classification of fruits you can see here. first of all simple फ्रूट होते हैं। सिंपल फ्रूट्स की आगे दो एग्जांपल्स हैं, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, फ्लैशी फ्रूट में आ जाती हैं ड्रप, बेरी, पीपू, पॉम एंड हेस्पेरिडियम। ड्रम जो होती हैं उसमें आ जाती है, एग्जांपल है उसकी मैंगो, और जो बेरी होती है उसकी एग्जांपल है टोमेटो। एंड पीपू जो है वो है गॉड, पॉम की एग्जांपल आ जाती है एप्पल, एंड हेस्पेरिडियम उसकी एग्जांपल है ऑरेंज। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी भी आगे दो तरह की टाइप्स हैं, वो है इंडिसेंट एंड डिसेंट, डिहाइसेंट। so this you can see here in the picture with different examples, and simple fruit, and aggregate and multiple। ये जो हमने पढ़ी है ये ड्राई और फ्लैशी या सिंपल फ्रूट्स की। और जो एग्रीगेट्स हैं दे मे बी एज ऑफ ड्रम्प एंड एक्नी। और जो मल्टीपल होते हैं वो जनाब उसमें पाइन एप्पल होते हैं, फिग होती है। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रूट कैन बी सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। सिंपल फ्रूट क्या होता है? वन फ्रूट दैट हैज developed फ्रॉम वन सिंगल फ्लावर। मोस्ट फ्रूट्स आर सिंपल फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, pear, tomato, peaches and cherries. Okay, these are the simple fruits. And next is the aggregate of the fruit. One flower that produce many tiny fruits clustered tightly together like raspberries, blackberries, strawberries. This is the aggregate fruit. Not in strawberry, the fruits are actually the seed like things on the outside of flesh. The flesh itself is not the ovary but swollen receptal issue. Next is the multiple fruit. Fruit from many different flowers which develop closely together to form one bigger fruit like pineapple, breadfruit and mulberries। ठीक है बच्चों, इसमें मतलब सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। इज इट क्लियर कि ये देखो कि मतलब सिंपल फ्रूट है उसमें डिवेल्प फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर से बना होता है, एग्रीगेट फ्रूट में मुख्तलिफ फ्लावर्स के से जो आगे बने होते हैं वो एग्रीगेट फ्रूट हैं, और मल्टीपल फ्रूट्स जो डिफरेंट फ्लावर्स वी डिवेल्प क्लोजली टुगेदर होते हैं मल्टीपल फ्रूट्स। And here are some major fruit types that we can eat, like acne, berry and grain type of the fruit. They are also known as caryopsis। और डिस्क्रिप्शन है जो एक्नी की वो क्या है, स्मॉल ड्राई फ्लू फ्रूट विद अ थिन
close fitting wall around a single seed। और इसकी जो एग्जांपल है वो है सनफ्लावर सीड्स एंड स्ट्रॉबेरीज वगैरह। और जो नेक्स्ट है वो है बेरी, अ फ्लैशी फ्रूट with many seeds inside। The outside of the berry fruit may be soft and hard and leathery. A lot of fruits we call berries are not true berries. Like raspberry, it is not a berry। इसकी जो एग्जांपल है वो है टोमेटो, ऑरेंज, कीवी, वाटरमेलन, cucumber, grapes, blueberries, cranberries। So these are the types. Even banana is also a berry। नेक्स्ट इज अ ग्रेन। ग्रेन, यू नो व्हाट इज द ग्रेन। ग्रेन को क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं कैरियोप्सिस भी कहते हैं। लाइक कॉर्न हो गया, राइस हो गया, वीट हो गई, बार्ले, और इसके जो है मतलब जो फ्रूट है उन्हें ग्रेन कहते हैं, लाइक कैरियोप्सिस। ओके। एंड नेक्स्ट इज द ड्रॉप, a fleshy fruit with a hard pit inside which contain the seed. The outside of the drop is usually soft। Okay, a peach, cherry, coconut, plum, olive, इनमें जो होते हैं इसमें इसकी तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ये होते हैं ड्रॉप। नेक्स्ट इज अ legume। Legume, a dry fruit that is long and thin and has several seeds inside lined up in a row when opened। Like all beans, also pea, peanut, these are the legumes. Like you can see in the picture, legumes are here। Next is the nut. This is also type of fruit, a dry fruit with a thick often wood-like shell surrounding a single seed। Not a lot of things we call nuts are not true nuts. Some like Brazilian nuts and other actually seeds are some like almond are the pit of dry drum। So this is the types of the fruits। And next is the palm। Palm, a fleshy fruit with a thin skin and paperly स्ट्रक्चर उसकी जो होती है वो मतलब यू कैन सी एप्पल, जैसे सेब है उस तरह के जो फ्रूट को मतलब कहते हैं पॉम। द फ्लैशी part is actually swollen receptacles tissue and not an ovary। Okay, and next is the capsule type of the fruit, a dry woody fruit with many seeds। Capsule open at maturity to release the seed। We do not normally eat capsule, but Brazil nuts are seed from a capsule। So this is enough for today। So this is a very important presentation, that what is the uh, diversity and classification of the fruits। Like first of all, what is a simple fruit, aggregate fruit and multiple fruit। And next is the fruit types क्या क्या हैं जी? एक्नी है, बेरी है, ग्रेन है, ड्रॉप है, लिग्यूम है, नट्स हैं, एंड पॉम है, कैप्सूल है। this type of the classification you have to read and understand। So students, if you have any question regarding this, please you can ask। किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछें।